एक बात बोली होती है मेरे लिए काम को कौन करेगा मेरे लिए तो है ना बिना यहाँ पर रहता कोई Hi guys, good afternoon everyone. Hello everyone, switch on your cameras. Daud, Gargi, Pragya, Khushi, Reet, Nandini, Ayush, Tamanna, Saima. Okay, Nandini. Hi, Stiparno. How have you been? बस चल रहा है. Okay, guys, quickly switch on your cameras. Let me see your faces after such a long time. It's been long time no see. Hello, Reet. How have you been all this while? Okay, ma'am. Okay-ish. Yes. Vaibhavi, hi. Switch on your cameras. Guys, quickly. It's an interaction after so long. You cannot be sitting and, switching off your cameras and sitting back nicely. Hi, Tamanna. How ma'am. Okay, ma'am. How are you? I'm all good. Disha, hi. Disha से तो अभी हम मिले थे. प्रज्वल, प्रतीक्षा, दाऊद, गार्गी, निखिल, नंदिनी, लक्ष्य, पुलक, oh sorry, वैभवी. This 2023, the laptop has been inducted with a new system, a new mechanism that after 3 times of name calling, if the camera does not switch, goes on, the server will remove the candidate by itself. है ना? तो अभी आप ये लास्ट कॉल है, उसके बाद आप खुद ही रिमूव कर दिए जाओगे. There is a glitch in my camera. Okay. Others? Gargi, how have you been? Okay, guys. I wish you a very happy, prosperous, fulfilling new year. I hope this year turns out to be very, very, very rewarding for each one of you. Whatever you desire for, may you realize. Or बताओ, how many of you are taking the exam seriously? Like how many of you are really aspiring for it? Daud, Sriparno, okay. Prajwal. Okay. Sample paper check किया आप लोगों ने? Sample paper देखा था? I won't be able to switch on my camera today due to network issues. किसी का PC है, किसी का glitch है. What is this? अच्छा, okay. Sample paper देखा guys? Solve भी किया? नहीं किया, that's okay. हम क्लास में कर सकते हैं उसको, we can discuss it as a mock series and we can solve and discuss simultaneously. मुझे बताओ, what is the कल का सेशन, जीजू सर का सेशन अटेंड किया था सबने? What did you notice? What difference did you notice in an LSAT exam than a CLAT exam? पढ़ने के लिए कुछ नहीं है. पढ़ने के Literally. देखो, छोटे छोटे पैसेजेस हैं, मतलब लॉजिकल इन इंग्लिश 2 सेक्शंस हैं, सो ऑब्वियसली लॉजिकल के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, है ना? बट द बेस्ट पार्ट इज छोटू पैसेज है. जीके नहीं होता, करेक्ट मैथ्स नहीं होता, एआर होता है, बट वैसे तो वाला मैथ्स तो नहीं. लेकिन 5 ऑप्शंस होता है और बहुत क्लोज ऑप्शंस होता है. पता है क्या आएगा? It's a standardized test. जीजो सर has said that a couple of times. It's a standardized test. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो सब कुछ आता है तुम लोगों को, सब कुछ तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत मॉक दिया, बट एग्जाम में जाके क्या ही हो जाता है मेरे बच्चों को, आई डू नॉट नो. सो आई रियली डोंट नो कि तुम लोग को पढ़ाने की प्रैक्टिस दूं कि तुम लोगों को पेप टॉक दूं. बट थोड़ा डिफरेंट किया है मैंने. आई विल मेक यू प्रैक्टिस सम GMAT
आरसीज छोटू होते हैं बट उनकी क्रिटिकल रीजनिंग बड़ी अच्छी होती है. So that's a quick practice. बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, but समझना बहुत होता है. It's like, you know, diving into the passage and reading between the lines. And the best part is कि critical reasoning के questions उनके ना GMAT वालों के बड़े सही होते हैं. तो वो थोड़ा आज हम practice करेंगे. बाकी I would like to hear from your end कि तुमको मतलब after CLAT हमने ऐसा tete-a-tete नहीं किया है, हम मिले नहीं, हमने बात नहीं की है. So I would like to know certain things from your end. Anything, मतलब what are you looking for now? क्या कॉलेजेस एस्पायर कर रहे हो, क्या है अब तुम्हारा तुम्हारे चार्ट्स पे, हाउ आर यू प्लानिंग टू गो अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट. आई वुड लाइक टू फॉर यू गाइस टू लिटिल ओपन अप, थोड़ा हल्का महसूस करोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें. So what is on your chart? How do you like to go about it? What do you want to, what are your expectations from LSAT and all of that? वैभवी, तूने एग्जाम के बाद सबसे पहले मुझे फोन किया था, जाते समय भी और आते समय भी. Let's hear from you. Vaibhavi, you there? बता, बंद कर दो. Vaibhavi, did you hear what I'm asking? कौन बात करेगा? Who's in a condition to talk? Like most of you have switched off your cameras. I don't know what behavior is this. Tamanna, you talk, baby. Yes, ma'am. Like MHCT, SLAT, these are the main priorities right now, and LSAT is also one, but like it's not the main focus right now. It's not the main focus, but still I'm giving it for practice so that मैं पढ़ाई से बहुत out of touch ना हो जाऊं. It will be handy. That's a fair strategy. But if you're targeting symbiosis, then MHCT, चलो MHCT तो फिर भी मैं थोड़ा नीचे रखती हूँ because of the quota and all of that. But if you're targeting SLAT, it's an easy exam to crack and it has tremendous scope. Yes, ma'am. सिम्बाइसिस लॉ के लिए नहीं, सिम्बाइसिस कैट वालों के लिए भी कैट के बाद बड़ी हैंड होल्डिंग करता है बिकॉज इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस टू केटर. So if you're going for Simbi, that's a very good enterprise. That's a good exam. That's an easy exam to crack. That's a very promising college. तो उसके लिए इतना हताश होने की बहुत जरूरत नहीं है. बट हाँ, क्लैट की काउंसलिंग पे थोड़ी नजर रखे रहना. Yes, ma'am. उस पे भी किया करेंगे. ठीक है. ओके, श्रीपर्णो, something to add to Tamanna? Yes, ma'am. Something to add to Tamanna? I'm just seeing colleges the whole day, and I have made Excel sheets and diaries and stuff. No, I'm not joking. Like seriously, there is not one college remaining in India. Like I have not searched the hell out of it. इतने प्रिसिशन से तूने पढ़ाई कर ली होती और इतने फोकस से तूने ना पेपर दे दिया होता ना. क्या था ना, वही तो दिक्कत है. क्या था, फिर भी नहीं हुआ. ठीक है, हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा. इतने बेकार बच्चे नहीं है मेरे. You guys are not that lot of idiots that you will not be able to cement any seat in any college for yourselves. You are bright students and always trust, have faith in God, have faith in the things that are lined up for you. Just give your best shot. You guys have studied. You guys have not left any stone unturned. You guys have been honest with your mocks and your practices and everything. So ultimately the aim is doing well for yourself, getting settled. Getting a degree and getting settled are two different things. So you all will get settled eventually and you all will do good for yourselves. There's no doubt and no second thoughts about it. LSAT में like 90 percentile plus at least try कर रहा हूँ, and SLAT and MHCT focus में mainly 90 percentile कितना स्कोर पे आता है पता है तुझे? Yep. How much is it? 90 percentile is 60. Like 75. 60 नहीं, 75 is 99 percentile. 70 के आसपास it comes. 70 के आसपास. It's 60 to 65 like 70 for a 90 plus percentile. It's 65 to 70. Yeah. 60 to 65 I thought. Okay. So 65 स्कोर के लिए ऐसा
मतलब बहुत, मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वैसा होके मत जाना कि नो आई हैव टू रेंज इन दिस slot and this slot. Take the paper, it's a standardized paper, go with the flow, don't go with any preconceived notions. ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिस करें। सारे बच्चे लॉ ग्रुप में है ना, लॉ डाउट्स ग्रुप में, सो शेयरिंग अ पीडीएफ देयर, ठीक है? ओके, 2 minutes and I'm sharing the PDF. Check, guys. I hope everybody is there in the doubt group, na?
File received? Yes, ma'am. ठीक है, 5 क्वेश्चन भेजे हैं मैंने. And I'm sending further pages. अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें क्लियर ना हो तो मतलब क्लियर इन द सेंस क्लियर इमेज ना हो, सो यू कैन शेयर. मैं फिर से भेज दूंगी. Guys, it is looking as if I'm talking and teaching to a black wall. I don't know what problem, unless until there's a genuine thing. I don't know why do you guys have a problem in switching it on. It just does not give the vibe and the feeler. तीन बच्चों को पढ़ा रही हूं मैं, बस 4. Kushi, you're so anxious about the class not started, but then you're not ready to show up. Everybody will switch on their cameras, otherwise before the discussion of the RC, I'll remove.
You let me know by a hand raise when you are done. I'll come. Done, guys? अच्छा, एक सेकंड के लिए मुझे ये बताओ कि आर यू फाइंडिंग इट कंफर्टेबल? थोड़ा बाउंसर तो नहीं जा रहा है? नहीं ना, मैनेज हो रहा है ना? ठीक है, ठीक है। मैंने बस ये इसलिए कराया बिकॉज इसके पैसेजेस की लेंथ छोटी है एंड इट हैज 5 ऑप्शंस, तो थोड़ा तुमको ना वैसा उससे रिलेट करवाने के लिए। अदरवाइज अगर लेवल थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैंने वैसे मीडियम वाले मॉडरेट टू इजी वाले निकाले हैं। तो अगर डिफिकल्टी आ रही है तो लेट मी नो, आई विल चेंज द स्टैंडर्ड।
Guys, you have done question 1 and question 2. एक बार थोड़ा तुम्हारा लाइन ऑफ थॉट डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ यू गाइज आर ग्रास्पिंग, उसके बाद आगे का करते हैं. Okay, switch on your cameras. Otherwise, I am removing and discussing it with only the students who are present. नंदिनी ने एक्सक्यूज किया था, शी इज एक्सक्यूज. प्रज्वल ने एक्सक्यूज किया था, ही इज एक्सक्यूज्ड. Vibhavi, Saima, Daud, Laksh, what's your problem, guys? ठीक है, okay. Fishco runs a number of farms in the arid province of Nufa, depending largely on irrigation. Now, as part of a plan to efficiently increase the farm's total production, it plans to drill down to an aquifer containing warm, salty water that will be used to raise fish in ponds. So now there is a situation where Fishco is having a lot of farms in a particular area, और अब वो अपने आप को expand करना चाह रहा है, और expand करने के लिए it is drilling down an aquifer where it will create a fish pond also. So now basically they are expanding. The water from the ponds will later be used to supplement piped-in irrigation water for Fishco's vegetable fields, and the ponds and accompanying vegetation should help reduce the heat in the area of the farms. मतलब वो एक्सपैंड तो कर रहे हैं, साथ साथ में दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन लिटिल थिंग्स कि जिससे उनका कहीं ना कहीं कॉस्ट एफिशिएंसी आए, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बेनिफिट टू द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड द एग्जिस्टिंग फार्म्स एंड द एग्जिस्टिंग बिजनेसेस. जो वो वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज होगा, एंड वो हीट को रिड्यूस करेगा, वेजिटेबल फील्ड्स को वाटर सप्लाई करेगा, एंड ऑल ऑफ दैट. सो नॉट जस्ट दे आर एक्सपैंडिंग, दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्सो. नाउ द क्वेश्चन सेज व्हिच आर द फॉलोइंग इफ ट्रू suggest that the plan if implemented would increase the overall efficiency. तो मतलब आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन सर्च करना है जो वो करने जा रहे हैं, फिश को जो करने जा रहा है, दैट इज एक्सपेंशन एंड ड्रिलिंग द एक्वाफायर, उसका कोई बेनिफिट बताए, उसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट इज ओवरऑल एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये हमें खोजना है. मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन टू बी प्लेस्ड अराउंड द पॉन्ड्स इज नेटिव टू नूफा. उससे क्या फर्क पड़ेगा? इट इज कंप्लीटली हैविंग नो इफेक्ट. Fish raised on Fishco's farms are likely to be saleable in the nearest urban areas. ऑफ कोर्स वो उसकी वो देख कर ही, बट इससे ओवरऑल एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उन्होंने रिसर्च करके ही फिश पॉन्ड खोलने की सोची होगी. मार्केट होगा तभी उन्होंने ये इस बिजनेस प्रपोजिशन को कंसिडर किया होगा. ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम फिश इन द पॉन्ड वाटर विल हेल्प टू फर्टिलाइज फील्ड्स. नाउ हम कुछ कर रहे हैं और उससे कुछ बच रहा है, वो भी हमारे काम का है. मतलब द रेसिड्यू, द फाइनल प्रोडक्ट इज अ यूजफुल थिंग, बट द रेसिड्यू इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर अस. तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी में ऑफ कोर्स काम आएगा. द गवर्नमेंट ऑफ नूफा, absolutely unrelated. Ponds will be located on low-lying land, now partially occupied by grain crops, has nothing to do. तो देख रहे हो ऑप्शन कितने far-fetched हैं, बट पैसेज थोड़ा सा समझने वाला था. अगर आपको पैसेज की सिचुएशन आपने डिकोड कर ली कि भाई हो क्या रहा है और हमको निकालना क्या है, और आपने एक करके ऑप्शन रिड्यूस किए, एंड द ऑप्शंस आर वेरी far-fetched, and you have got your answer. So I hope C is the clear answer for everyone. Yes, ma'am. ठीक था, ओके. सो दैट्स द थिंग. और इसमें बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है. तो इट इज, किसी ने बोला था ना एप्टीट्यूड टेस्ट है एंड नॉट अ मेमोरी टेस्ट. इट इज इंडीड एन एप्टीट्यूड टेस्ट. थोड़ा सा सैनिटी को इंटैक्ट रखना, पैसेज को समझने की कोशिश करना, लॉजिकल के क्वेश्चन ज्यादा है, तो ना लास्ट क्लास में ना पिस ऑफ मत हो जाना. ओके. Stockholders have been critical of the Flyna company, a major furniture retailer, because most of Flyna's furniture is manufactured in country X from local wood, and illegal lodging is widespread there. However, Flyna has set up a certification scheme for lumber mills. It has hired a staff of auditors and forestry professionals who review documentation of the wood supply of country X's lumber mills to ensure its legal origin. Make surprise visits to mills to verify documents and certify mills as approved sources of legally obtained lumber. Okay. Flyna uses only lumber from certified mills.
Does Flynas claim that its country X wood supply is obtained legally is justified? अच्छा, मतलब अब सिचुएशन ये है कि फ्लाइना जो है वो कंट्री एक्स के लोकल वुड से अपना फर्नीचर बनाती है और कंट्री एक्स में बहुत सारी इलीगल लॉगिंग हो रखी है, राइट? और फ्लाइना ने बहुत सारा स्पेशलाइज स्टाफ भी रखा है कि वो कंट्री एक्स की मिल्स में जाए, डॉक्यूमेंटेशन और इंस्पेक्शन इंश्योर करे कि जो जो उसका सप्लाई है वो अप्रूव्ड हो। मतलब फ्लाइना अपने आप को किसी भी कंट्रोवर्सी में ड्रैग नहीं करना चाहता है, ऑल दो कंट्री में ये काम होते हैं, बट उसने अपने आप को समहाउ बहुत क्लीन, प्योर और प्रोटेक्टेड रखा है, इसीलिए वो टाइम टू टाइम चेक्स एंड इन्वेस्टिगेशंस कराता रहता है। फ्लाइना's claim that its wood supply is legally obtained जस्टिफाई है क्योंकि उसने अपने एंड से नो स्टोन अनटर्न्ड रखा है। अब क्वेश्चन क्या है कि which of the following if true would most undermine the justification provided by Flyna's claim? और फ्लाइना का क्लेम क्या है कि हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ द वुड इज लीगल। तो अब कोई चीज जो उसके प्रोसेस को अगेंस्ट हिट करेगा वो इस आर्ग्यूमेंट को अंडरमाइन करेगा, ठीक है? ओनली अबाउट 1/3 ऑफ फ्लाइना's इंस्पेक्टर्स। अच्छा, पहले एक बार मुझे बताओ तुमने क्या मार्क किया है आंसर? डी। डी? मैम डी डी। मैंने डी फॉर सी। डी फॉर दिल्ली। यस मैम। किसी का कोई और आंसर? सी। सी, ओके। This has no bearing on whether Flyna's Flyna has to pay higher than expected salaries to attract qualified inspectors. The proportion of country X's lumber mills inspected each year by Flyna staff is about 10% randomly selected. ये तो मैं बोलूं ना कि अरे नहीं नहीं भाई, हमारा क्वालिटी चेक पूरा है और उस क्वालिटी चेक में हमारा सैंपल साइज 1/4 का भी नहीं है, तो हम क्वालिटी चेक कैसे इंश्योर कर सकते हैं? वो कह रहा है कि लीगली जस्टिफाइड है हमारा सोर्स और उसने अपने इंस्पेक्शंस किए हैं थोड़ू से नंबर पे एंड इट इज वास्ट। तो ये ज्यादा डी ज्यादा अंडरमाइन कर रहा है रादर देन सी विच इज सेइंग फ्लाइना हैज had to pay higher than expected salaries to attract qualified inspectors। तो qualified inspectors तो उसके फेवर में काम करेंगे ना, कि वो सही इंस्पेक्शन करेंगे, तो ये तो अंडरमाइन नहीं करेगा, ये तो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? सो द आंसर इज डी। एनीबडी एनी क्वेश्चन हियर? ठीक है, ओके। नाउ यू गाइस कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू इन 2 मिनट्स। आप आगे का करिए और इसके बाद इफ यू आर डन विद दीज 3 क्वेश्चंस आई हैव सेंट अनदर पीडीएफ आल्सो, सो यू कंटिन्यू, विल डिस्कस 2 to 3 क्वेश्चंस।
Hello guys, question number 115. Question 115, everybody. XCT automobile is considered less valuable than Zenke because insurance companies pay less on average to replace a stolen XCT than a stolen Zenke. Surprisingly, the average amount insurance companies will pay to repair a car involved in a collision is typically higher for the XCT than for Zenke. Zenke के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? One insurance expert explained that repairs to XCT automobiles are specially labor intensive, and labor is a significant factor in collision repair costs. Repairs to XCT automobiles are labor intensive and labor is acha. Okay. Which of the following, if true, most strongly supports the insurance? अरे म्यूट हो गया. Okay. वेरी सिंपल आंसर कि XCT का हर चीज में प्राइस ज्यादा क्यों रहता है देन Zenke, क्योंकि लेबर फोर्स इन्वॉल्व है एंड लेबर इज अ टिपिकल एंड सब्सटैंशियल एलिमेंट फॉर एनी रिपेयर कॉस्ट. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द इंश्योरेंस? हाँ जी, Ma'am, I think D. ठीक है. हाँ दिशा. ओके, एवरीबडी एल्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद दिशा? नहीं? Say your answer then. C. There are more automobile mechanics who specialize in XCT repairs than in Zenke repairs. ठीक. But तमन्ना, क्वेश्चन पूछा है, मतलब एक्सप्लेनेशन है कि XCT ऑटोमोबाइल्स का हर चीज में कॉस्ट ज्यादा इसलिए है बिकॉज उनका लेबर थोड़ा सा स्पेसिफाइड है एंड लेबर इज अ वेरी सब्सटैंशियल एलिमेंट. और ये बात एक एक्सपर्ट ने कही है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द एक्सपर्ट्स कमेंट? विच इज कि बिकॉज भाई उनका लेबर थोड़ा हाईली स्पेशलाइज्ड है और उसकी कॉस्ट ज्यादा है इसलिए ये लोग पे लेस करते हैं. ठीक है, पे लेस ऑन अ स्टोलन XCT देन अ स्टोलन Zenke को ज्यादा मिलता है व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस. तो सी जो है ना, देयर आर मोर ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स हु स्पेशलाइज इन XCT देन इन Zenke, ये नाइदर सपोर्ट नॉर अंडरमाइनिंग वाली सिचुएशन है इसकी. इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. ये इफेक्ट क्या डाल रहा है? ये तो कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है. और एक्सपर्ट कह रहा है कि XCT लेबर इंटेंसिव है इसलिए जो है कि कोलिजन में उसकी रिपेयर कॉस्ट ज्यादा आती है इसलिए उसका इंश्योरेंस क्लेम कम मिलता है. Okay, ma'am. B कह रहा है the ease of repair of Zenke is one factor that adds to their value. ठीक है, तो भाई ईज भी है, लेबर आराम से रिपेयर भी हो जाती है, लेबर उतना कॉस्टली नहीं है और इसलिए उनके कोलिजन के बाद उनके इंश्योरेंस रिटर्न ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट की बात तो सही हुई ना कि XCT की प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका लेबर स्पेसिफाइड है और उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है इसलिए इंश्योरेंस लेस क्लेम होता है. और सेम चीज रिवर्स है Zenke में, इसलिए ईज ऑफ बिजनेस है, ईज ऑफ लेबर कॉस्टिंग है इसलिए उनका इंश्योरेंस ज्यादा आता है. सो दैट इज D. राइट दिशा एंड एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े. अरे मुंह तो खोलो बच्चों. Yes, ma'am. Sitting like, ठीक है. 116 श्री पढ़ो, तू पढ़. Question. हाँ तो बोलोगे तो तुम लोग इसी बहाने. म्यूट है तू. Screen छोटा कैसे हो? The screen, the sustained the sustained massive use of pesticides in farming has two effects that are especially pernicious. First, it often kills off the pest natural enemies in the area. Second, it often unconditionally gives rise to insecticide resistant pests. Since those insects that survive a particular insecticides will be the ones most resistant to it, and they are the ones left to breed. From the passage above, it can be properly inferred that the effectiveness of the sustained massive use of pesticides can be extended by doing
Uh, which of the following, assuming that H is realistically possible? I am sorry, Sriparno. क्यों? I'm so sorry. क्या? I asked you to read. पढ़ा तो? So only I'm sorry, na? नहीं, मेरा एक्चुअल तबीयत बहुत खराब है तो इसलिए मेरा भी खराब है. Even I'm coughing whole day. So then what does that mean? हो गया ना? या फिर ऑप्शन से पढ़ना है? हाँ, ओके. तो द सिचुएशन ये है कि पेस्टिसाइड का बहुत यूज है और वो इट ऑफन किल्स द टारगेटेड पेस्ट एंड द नेचुरल एनिमीज, है ना? और उसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि उससे जो पेस्ट बच जाते हैं, जो पेस्टिसाइड बच जाते हैं, वो उसके यूज टू हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं. And these resistant pests will continue breeding. The question क्या है from the passage? It can be properly inferred that the effectiveness of the sustained massive use of pesticides can be extended by doing which of the following? मतलब effectiveness increase. Okay, ठीक है. Using only chemically stable insecticides, no. Periodically switching the type of ये insecticide, पता. yes, क्योंकि वो resistant ना हो उससे. Gradually increasing the quantities of pesticides used. ये भी हो सकता है. Leaving a नहीं, few इससे fields shallow. रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ब्रीडिंग है. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द क्वांटिटीज ऑफ पेस्टिसाइड यूज. हाँ, क्वांटिटीज नहीं, वॉल्यूम की, मतलब कोई भी पेस्ट बचे ना, क्योंकि जो बचता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है. ठीक है, ओके. हाँ, बी इज द आंसर. और इसमें मुझे दो चीजें पूछनी है. पैसेज में एक वर्ड है परनीशियस, उसका मतलब, और ऑप्शंस में एक वर्ड है फैलो, उसका मतलब. मैम pernicious means dangerous. डेंजरस, हार्मफुल. करेक्ट है दिशा. हम फैलो मतलब खाली छोड़ देना वाली. फैलो मतलब खाली छोड़ देना. अगर मैंने कोई एक छोटा ब्रेक लिया जिसमें मैं खुद को रिजुविनेट कर रही हूँ, तो दैट इज माय फैलो पीरियड. जब दो सीजन, हार्वेस्ट सीजन के बीच में लैंड को कुछ देर के लिए खाली छोड़ा जाता है, सो दैट इट गेट्स इट्स फर्टिलिटी बैक, दैट्स द फैलो पीरियड. ठीक है. 17. Which of the following, if true, most logically completes the argument below? Manufacturers are now required to make all cigarette lighters child resistant by equipping them with safety levers. But this change is unlikely to result in a significant reduction of the number of fires caused by children playing with lighters. Because children give the opportunity and they can figure out how to work the. ठीक है, ओके. बच्चे तो खैर बच्चे ही हैं, वो तो सब चीज का शॉर्टकट निकाल ही लेंगे. तो क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द आर्ग्यूमेंट. हाँ, बताओ क्या हो सकता है ये? मैम बी. Disha, what is the reason for this enthusiasm today, baby? Switch on your camera. क्या खाया तूने आज नाश्ते में? मैम मेरे आंसर सही जा रहे तो मैं खुश हूँ थोड़ा. नहीं भी जाए तो भी खुश रहना चाहिए. हैप्पीनेस इज अ चॉइस. बताओ, बाकी लोग बताओ. दाऊद, नंदिनी, आयुष. Again, everybody has switched off their cameras. Guys, can anyone answer? Or just for the heck of it, you guys are there? B. बी के अलावा किसी का कोई? बी इज द राइट आंसर. एनीबडी जिसका आंसर सही नहीं है, वी कैन डिस्कस द ऑप्शन दैट यू हैव मार्क्ड. यस, आपका बी है. ओके. these 5 questions were from the first PDF ना? सेकेंड PDF करो अब.
Okay, guys. (180). Which of the following most logically completes the passage? C. A. A. हाँ, A. Anybody else? सबका A है. मैम डी. मैम बी. बी. हाँ, तो मतलब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन है. सो ओनली आई वाज वेटिंग कि कोई ऐसा आए तो कि जिसमें ज्यादा कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसमें क्या कह रहा है कि एपेनाइन सिस्टम में inter urban routes generally carry enough passengers, but few routes, only few routes too. तो लास्ट लाइन क्या है? Closing unprofitable rural routes, however, will not necessarily enhance the profitability of the whole system. Since, और दिशा ने बोला B, right दिशा? यस मैम. Beta, since within the last 2 decades, several of the least used rural routes have been closed and their passenger services have been replaced by buses. अगर बहुत सारे बंद भी हो गए हैं तो भी तो फैक्ट ये हो सकता है ना कि जो बचे हैं वो भी there are too little used to be profitable. So B does not make sense. किसी ने बोला C. The rural routes were all originally constructed at least 100 years ago, whereas some of the inter-urban routes were constructed recently for new high-speed express trains. ये तो आउट ऑफ स्कोप है. ये एक सेकेंड, अगर आप क्लोज भी कर रहे हो, बहुत ओल्ड रूट्स को क्लोज कर रहे हो, तो it is least likely to enhance the profitability. A says a large part of the passenger volume on inter-urban routes is accounted for by passengers who begin or end their journeys on rural routes. Correct. So this suggests that closing the rural routes could discourage many passengers from traveling. So that will more, closing unprofitable routes will not necessarily enhance the profitability of the whole system, since a large part of the passenger volume on inter-urban routes is accounted by passengers who begin or end their journeys. तो उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी से कोई बहुत लेना देना नहीं होगा, रिड्यूसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द रेल रोड सिस्टम, क्योंकि आप बंद कर दोगे, बहुत सारे पैसेंजर्स उसको यूज नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट करेगा. ए इज द मोस्ट लॉजिकली करेक्ट आंसर व्हिच क्लोजेस द आर्गुमेंट. मेक सेंस? मैम व्हाई नॉट डी? व्हाई नॉट डी डेल्टा. well served by inter-urban railroad services. तो अगर एनीवेज लार्ज सिटीज में आपके पास बेटर रेल रोड्स हैं, तो वैसे भी अगर आप अपना इफ यू विल क्लोज अनप्रॉफिटेबल रूट्स, it can enhance. ठीक है, चलो मेरा उससे इक्विवेलेंट नहीं है, बट इफ आई कैन मैनेज ऑन माय प्रॉफिटेबिलिटी, तो ऑफ कोर्स मेरा बेटरमेंट तो होगा ही ना. सिस्टम की प्रॉफिटेबिलिटी वो तो एनहांस कर ही रहा है ना, if not comparing with the others are equally well served by inter-urban railroad. ठीक है, बट वो मेरे अनप्रॉफिटेबल रूट्स को बंद करने से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी. ठीक, 19 किया. In its search for new technologies for solar energy that can produce lower cost electricity, Smith Datum is developing a new way to make dye sensitive solar cells, in which photons strike light-sensitive dyes. The process uses diatoms, which are unicellular algae that have silicon shells with a complex structure. First, the organic material is removed, and then the shells are coated with titanium dioxide that acts as a semiconductor. बाप रे, कितना लंबा प्रोसेस है. फिजिक्स आ जाती है तो मैं वैसे ही डिसलेक्सिक हो जाती हूँ.
ये कह क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, कोई समझाएगा मुझे लेमन लैंग्वेज में? कोई फिजिक्स वाला बंदा समझाएगा कि ये हो क्या रहा है? मैम ये वाला तो करना ही डाई नहीं है। ये वाला, वो डाई एक सेकंड, हाँ तमन्ना व्हाट? मैम ये वाला करना ही नहीं आया, लाइक कुछ भी आइडिया नहीं लगा इसमें। 20 100 and डाई 30 क्या है? डाई सेंसिटिव सोलर सेल्स होता है लाइक कलरिंग बेस्ड पे। तो आपका जब सनलाइट उसके ऊपर गिरता है, देन इट the diatoms unicellular algae, these are generally found मतलब in the rocks of the sea, ठीक है ना। यूनिसेलुलर एल्गीज में बहुत सारे एल्गीज आते हैं, रेड एल्गी, ब्लू एल्गी, ग्रीन एल्गी, and to have silicon cells and a complex structure. First the organic material is removed. So organic material from the algae is removed. The shells are coated with titanium oxide. Titanium oxide is a semiconductor, n type semiconductor, np type semiconductor. वो आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में लाइक हेल्प सोलर करता है। सेल, हाँ, तो फ्रॉम लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट करता है एंड रिजल्ट्स इन मोर फोटोन एक्टिविटी, दस मोर एफिशिएंसी इज प्रोड्यूस। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है इट इज टू कॉस्टली एंड उतना इफेक्टिव भी नहीं है, लेकिन ये जो नया प्रोसेस की कोशिश कर रहा है लाइक द डाई सेंसिटिव वन, इट इज मच मोर चीपर, क्योंकि एल्गीज एंड डायटोमिक एल्गीज वो दीज आर इन नेचुरल होते हैं, मास। उसमें हाँ और जी। फर्दर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। So that एंड C should be the answer then? हाँ, That way C should be the answer. मैं सी क्या हूँ लेकिन बी को सर्कल करके रखा हूँ। मैं बी और सी में The थोड़ा current कंफ्यूज। cost of electricity produced by dye-sensitive solar cells is roughly 3 times than that of non-solar electricity. ओह, पर वो तो बोल रहा है कि if हाँ वो implemented कम will होगा ना, ना ना, सी produce होगा, सी low होगा। cost electricity, तो low cost तो यही है ना कि naturally हो रहा है, लो उसमें कॉस्ट, further हाँ कोई और हाँ, process में आपको सी cost नहीं सी incur करनी है, तो low cost तो फिर then C should be the answer सी ना। मैंने किया हूँ सी, लेकिन लाइक बी पता नहीं ऑप्शन पे रखा था। ठीक है गाइस, समझ में आया ये जो इसने श्रीपर्ण ने समझाया? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ही सेड कि वो एक कॉस्टली प्रोसेस है, अभी जिस प्रोसेस से वो बन रहा है, तो द हाइपोथेसिस विल सपोर्ट द प्लान, इफ ट्रू विल सपोर्ट द प्लान, एंड द कॉस्ट ऑफ द सोलर सेल्स विल बी अ लो कॉस्ट इशू। क्यों? क्योंकि diatoms occur naturally and no engineering process is needed to produce the basic dye-sensitive solar cell structures, is what is sounding correct to me according to what Sri Parno explained. बाकी हाँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, बट आई गेस नंदिनी को भी डिफिकल्ट लगा, तो ये होगा डिफिकल्ट। मुझे तो थोड़ा ये फिजिक्स समझ में नहीं आती। 120 किया, पहुंचे आप लोग यहाँ डी तक? होना चाहिए था। हाँ जी। हम डी भी हो सकता था 19th का। Dye-sensitive solar cells work somewhat more efficiently in lower light than previous solar cell technologies. ये तो मेंशन नहीं है ना, लाइक लेकिन नहीं 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 नहीं, मेंशन तो है, लेकिन उसके प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आएगी? इट कैन बी अ कॉस्टली प्रोसेस, फिर तो बढ़ जाएगा ना वो। लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डाई सेंसिटिव सोलर सेल्स, लेकिन और ये जो आप कह रहे हो कि प्रीवियस सोलर सेल्स मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव थे लो लाइट में काम करने के लिए, बट वो सेल्स को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तो हो सकती है ना। तो राइट प्रद्युम्न? हम लेकिन अगर ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेगा। बट अगर उनका उस इस एफिशिएंसी से काम चल रहा है और दे डोंट वांट टू, दे देखो क्राइटेरिया क्या है कि लो कॉस्ट होना चाहिए, प्रोड्यूस लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उनको मतलब बिजली है ना, उस पे वॉट और ये और वो से उनको क्या मतलब है? दे आर फोकसिंग ऑन लो कॉस्ट, तो वी विल ऑल्सो फोकस ऑन लो कॉस्ट, कि अगर हम वो ज्यादा इफेक्टिव था लेकिन अगर उसकी कॉस्ट ज्यादा है तो वी विल गो फॉर समथिंग विच इज अ लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इवन अगर हमने एफिशिएंसी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज भी किया है तो दैट वे सी इज द मोस्ट राइट चॉइस आंसर। ठीक, 20 तक पहुंचे आप? नहीं करिए, यस मैम। 20 करिए।
Okay, guys, 120. Done with 120? Yes. So the situation is सबवे फेयर्स को अथॉरिटीज को सबवे फेयर्स को लो करना है और इससे उनका एजेंडा ये है कि इससे जो राइडरशिप है वो 10% बढ़ेगी और उनका जो ऑपरेटिंग डेफिसिट है वो कम हो जाएगा. ठीक. Now, which of the following, if true, provides the most support for the transit authority's expectation of reducing the subway system's deficit? Your answer? Ma'am, option D. Pragya, Gargi, Daud, Prajwal, your answer? Guys, I'm not interested in having students who are not showing up, who are not responding, and I'm continuously at their... Prajwal, you're not there? You can at least tell the answer. Daud, you can tell the answer. Gargi, what have you marked? Pragya, what have you marked? Laksh, Vaibhavi, Saima, Nandini, at least you can send me your answers. Throughout the years that the subway system has operated, fares have never before been reduced. So what? The planned fare reduction will not apply to students. No, not connected. Next year, the transit authority will have to undertake several large-scale track maintenance projects. Support to nahi kar raha hai. The subway system can accommodate a 10% increase in ridership without increasing the number of trains it runs each day. हाँ. So profitability बढ़ रही है, cost नहीं बढ़ रही है. Okay. The current subway fares in Ackerberg are higher than. D mark किया क्या आप लोगों ने इसका आंसर? Yes, ma'am. 121. At several locations on the northwest coast of North America are formations known as chevrons, wedge-shaped formations of mounded sediments, pointing towards the ocean. Okay. Most geologists take them to have been formed by erosion, but recently other scientists have proposed that they were thrown up from the ocean by massive waves triggered by meteor impacts in the Pacific Ocean. Most help in declining in deciding which hypothesis is correct. Which hypothesis? मतलब दो hypotheses हैं क्या? Yes, ma'am. At several locations on the northwest coast of North America are formations known as chevrons, wedge-shaped formations pointing towards the oceans. Most geologists take them to have been formed by erosion, but recently, अच्छा, okay. कुछ कहते हैं erosion से बना है, then they're thrown up. अच्छा, ठीक है. Which are the following? Okay, chevron-like structures which are not currently near glaciers, large rivers, or other bodies of waters. So, the presence in chevrons of deposits of ocean microfossils containing metals typically formed by meteor impacts. That means ये second scientist वाले उसको support कर रहा है. Okay. Oral history evidence for flooding that could have been caused by ocean waves. Oral history evidence. Oral history. The fact that exact data about the location and depth of any meteor impact craters on the Pacific seabed is lacking. I think B should be the answer. Yes, ma'am. D mark करें. B, because containing metals, the microfossils containing metals typically formed by meteor impacts, यही एक substantial evidence है second वाली theory को prove करने का. बाकी और चीजें out of scope है और unrelated है. So 121B, any questions asked here? किसी को कोई confusion? Gargi? No, ma'am. No, ma'am. Okay. 122? या है कि कर रहे हैं? हम सारे कर लिए. सारे कर लिए? चलो, let's discuss in a row. Sparrow Airlines is planning to reduce its cost by cleaning its planes once a month rather than the industry standard of every 6 months.
With cleaner engines, Sparrow can postpone engine overhauls, which take plans out of service for up to 18 months. Furthermore, cleaning an engine reduces its fuel consumption by roughly 1.2%. मतलब 6 monthly की जगह वो monthly करेंगे, यही ना? This is what they are saying. Yes. तो cost को reduce करेंगे, ठीक है? तो the plan assumes what? चाहिए इसका हाँ? हम B होना चाहिए इसका. Okay. Fuel prices are likely to rise in the near future, and therefore cutting fuel consumption is an important goal. Cutting fuel consumption. तो है नहीं, fuel की तो बात नहीं है. The cost of monthly cleaning of an airplane engine is not significantly greater. हाँ, okay. ये assume कर रहा है, इसीलिए वो monthly कर रहा है. Engine cleaning does not remove an airplane from. Sparrow Airlines has had greater problems with engine overhauls. हाँ, ठीक है. B makes sense to me. 122 B है. किसी का कोई और आंसर नहीं? ओके. 123 क्या किया आपने? लेट मी हियर इट फ्रॉम अदर्स. 123 क्या किया? हम replace वो payment by actual वाला option B. बाकियों ने क्या किया? Everybody's answer is B. D for Delhi. Ma'am, Yes, D. ma'am. Delhi. Patrick usually provides childcare for 6 children. Parents leave their children at Patrick's house in the morning and pick them after work. At the end of each work week, the parents pay Patrick at an hourly rate for the childcare provided. The weekly income Patrick receives is usually adequate, but not always uniform, particularly in the winter when children are likely to get sick and be unpredictably absent. Which of the following plans, if put into effect, has the best prospect by making Patrick's weekly income both uniform and adequate? Poor resources with a neighborhood. Replace payment by actual hours of childcare provided by a fixed weekly. Increase the hourly rate to a level that would provide. नहीं. B, hourly rate increase कर भी लें तो भी अगर बच्चा absent ज्यादा time के लिए हो रहा है तो that will not create much of a difference. B is the right answer. 124. 124 क्या किया? If there is no confusion, we can skip the discussion. Ma'am, A करा. 124 A. Anybody, any other answer? Saving energy because it takes fewer truckloads to transport. Chooses transport. Which of the following, if true, would provide the greatest additional support to the editorial's conclusion? Freezer trucks are substantially more energy per mile driven than do any other type of trucks. Frozen juice can be stored. Conclusion क्या दे रहा है? But they are mistaken. Amount of energy required to concentrate the juice is far greater than the energy difference in the juice's transport. मतलब A option यही कह रहा है ना कि 1 truckload of frozen juice is more energy than non-concentrated juice. So A should be the answer then, na? No, frozen juice को ले जाने में ज्यादा energy लगती है. नहीं, A is not the answer. Yes. Anybody else? वो कह रहा है ना, would provide the greatest support to the editorial's conclusion. और conclusion ये है कि the amount of energy required to concentrate the juice is greater than the energy difference in the juice's transport. तो frozen juice को truckload of frozen juice को transport करने में ज्यादा energy लगती है. So that ways, freezer trucks are substantially more energy per mile driven than do any other types of trucks. So that ways A. Guys, can you please respond? I am not getting the cake
Yes, ma'am. Option A. Okay, 1 second. Okay, 184, 125. 125 क्या मार्क किया आपने? A computer equipped I'm with C. signature recognition software, which no other than Pradyumna, I want somebody to answer. और अगर नहीं किया है guys, so we can wait for you to solve. But at least communicate what is going on. Has everybody completed? Are Baba, has everybody completed till question number 130, or you guys still doing? You need time. What is the scenario out there? I don't know what is the problem in answering. क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ कर दिया आप लोगों ने, सबने कर लिया है 125 to 130 या कर रहे हो अभी, तो वी कैन वेट. ओके ठीक है, करिए.
कर लो guys, done? कर लो करके बोल दो. चलो 125. I want you to answer. And C. एक सेकेंड ना दिशा, just let me read. हाँ ठीक है. C correct. Gargi D says signature recognition software has taken many years to develop and perfect. हाँ ठीक है, लेकिन गार्गी ये कैसे निकालेगी कि it took years to develop from the passage? You have to draw the conclusion, right? Can be logically concluded. तो logically years लगे उसको बनने में, ये नहीं बोल सकते. So that was C. 126 guys, what's the answer? D. Only land transportation to Ritland Seaport is via a divided highway. One side carrying traffic to the seaport and one carrying traffic away from it. ठीक है. Difference in the rate of water. I did not get the question. What does that mean? Most help to explain the difference in the rate of where? Oh, okay, okay, sorry. ठीक है, D, okay, Pradum. ठीक है. A greater tonnage of goods is exported from Ritland Seaport than it is imported through it. मतलब कि जो वहां पर जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, that are more heavier, मतलब एक side of the highway, no, leading to the seaport, or returning on the other side, वो नहीं है. So the difference, मतलब आने और जाने का difference would explain the rates of wear, यही ना? Yes. ठीक है. Okay, okay, D. 127 guys. E. Fifth one. E. Small diesel engine that produces 30% less particulate pollution than the engine made birds. क्या कह रहा है ये, मुझे इस क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया. Plans to ban within the next 2 years the use of diesel engines with more than 80% of current diesel engine particulate emissions in Marina. Okay. And ones will probably not be able to retool its engine to reduce emissions to reach. ये मुझे आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे बी भी लग रहा है. प्रदम जस्ट होल्ड, हाँ ना, लास्ट में मैं इसका आंसर चेक करके बताती हूँ तुझे. 128 C. In one region, agriculturists are attempting to improve nutrition by encouraging farmers to plant a new variety of sweet potato called A that is rich in beta carotene, which the body converts into vitamin A. The plan has good chances of success since sweet potato is a staple of the region's diet and agriculture, and the varieties currently grown contain little beta carotene. Succeed.
हाँ सी ठीक है, लेकिन ए को किस बेसिस पे डाउन किया प्रद्युम्न? वो ये भी तो कह रहा है कि सारी कंडीशंस उसको सपोर्ट करती है सो दैट द कल्टीवेशन वुड फ्लरिश। तो उससे भी तो उनका प्रिडिक्शन सही हो सकता है कि ए को कैसे डाउन करेंगे? मैम कंडीशंस मतलब फेवरेबल है, लेकिन इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि कोई और प्रोडक्ट भी उसके कॉम्पिटेंट है। तो और प्रोडक्ट से क्या ही मतलब है? द प्रिडिक्शन दैट द प्लान विल सक्सीड, तो प्लान के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो प्लान सक्सीड करने का चांसेस इस बात से बढ़ नहीं जाता है कि जो कल्टीवेशन कंडीशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं। ये भी मुझे भी ए लग रहा है, तुझे सी लग रहा है, ये मैं भी चेक करती हूँ। 29 आओ, 129 ओके, कंप्लीट द सेंटेंस है। Fossils of this animal, however, do not show any hump. Nevertheless, there is no reason to conclude that the cave paintings are therefore inaccurate in this regard, since सी 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 होगा। which does not fossilize. ठीक है, C. 130 क्या किया? बी बॉम्बे। Assumes that deliberate delay of packages will not सॉरी, affect the ये करा मैंने उसका। company's image in a way that significantly reduces equity. B तो नहीं होगा. If the plan is not implemented, the company would not. If the plan is not implemented, the company would not lose more money. Cannot be the assumption. The overnight service is too expensive to be attractive. No indication the company believes. Okay. Competing companies' delivery service rarely deliver packages. इसमें तो कोई assumption नहीं है. So it should be A. हाँ, ठीक है. A. अब हमें क्या कौन से आंसर्स चेक करने हैं? 127 और 128. ओके, 127 and 128. One 127 is E and 128 is A.